ओके, सो उसमें क्या इशू होता है, तो आपका कुछ लोग है, कुछ एक्सटेंशंस है विच पीपल यूज समटाइम्स टू क्रिएट LWC using those extensions, but those firstly don't work as well, and secondly those exceptions are private extensions that are created by individuals about whom you know nothing. Okay, so that is why in organizations, in companies जहाँ पे लोगों का private data, personal data, financial data store हो सकता है, you do not want any unverified person to have access to. जब आप किसी एक्सटेंशन वगैरह से आप लॉग इन कर लेते हैं, आप अपने Salesforce org में एक एक्सटेंशन को एक्सेस दे रहे हैं, you have to remember that means that extension now has access to log into your organization, fetch data from your organization, deploy code into your organization. Okay, so that is why that is a potential data risk hazard, which is why we should always prefer to go with recommended channels, recommended softwares, and for Salesforce as of now, Visual Studio Code is the recommended ID, integration development environment for Salesforce. Am I clear? Is this understood? Yes, sir. Yes, sir. Right? So always remember this. Second thing, now all of you have supposedly installed Visual Studio Code and JDK into your JDK आप default install करेंगे, वो C program files में automatically install हो जाएगा. Nothing you have to do from there. Once you have installed JDK, then the next part is Visual Studio Code. मैंने आप लोगों को install करने को बोला था. Right? Hopefully all of you have Visual Studio Code installed right now and it is running in your laptop as of now. चल रहा है अभी आप सबका? Yes, sir. Yes. Now, today what we'll do is we'll parallelly work on this. Okay. You guys can see my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Right? Okay. Oh, this, uh, split this extra step. Right. So now, all of you will also go to Visual Studio Code, and this is the welcome screen which every one of you should be seeing as of now. करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, आप सब अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे, आपको ये स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्लीज कंफर्म यस और नो. Yes, sir. फाइन, ग्रेट. नाउ ऑन द लेफ्ट साइड टुडे जैसे हमने डेवलपर कंसोल देखा था, सेम विजुअल स्टूडियो कोड का भी पूरा इंटरफेस है. दिस इज द वेलकम पेज. ये आपका जब विजुअल स्टूडियो कोड पेज आप खोलेंगे जब भी, तो यही दिखेगा आपको. बट द मेन थिंग्स व्हिच विल बी वर्किंग विद इज द लेफ्ट हैंड साइड. This first thing is called the Project Explorer. Okay. All of these we will actually explore. So before that, I want to get something out of the way. ये जो यहाँ पे आपका फिफ्थ जो आपको दिख रहा है, extensions. Please, I want everyone to go to this extensions tab. Okay. All of you, please go to this extension tabs, and I'll just mention all these extensions which you should install in your VS Code. Now all of these separately you can install, but ये Salesforce वाले जितने हैं ये एक साथ install हो जाते हैं. So I'll just ping that in the WhatsApp group, and I want you to search all of those and install. Okay, the ones which I would say are the most common ones, or rather I would say most required ones. Okay, of course. पैरेलली आप लोग ये इंस्टॉल करना शुरू कर दीजिए अभी. एक्सपेंडेड, देन वी हैव, ये तो Salesforce के अंदर से आ जाएंगे. XML यू शुड इंस्टॉल. प्रिटियर का जो है
ये आप इंस्टॉल कर लीजिए. You may not need to learn now, but it will come into use later on. Okay. Make sure you install the git lens and git graph. मैं git lens git graph का आपको एग्जांपल दिखाऊंगा how it works. Okay. So in your wherever organization आप जहाँ भी ज्वाइन करेंगे वहाँ पे hopefully it should be needed. There are very few programs or projects which still don't use it, and just use ESLint. ESLint is linter basically. Very. I've pinged these extensions in the WhatsApp group. Mhm. Right. Have you all guys received my message in the WhatsApp group? Yes or no? Yes, sir. Right. So all of you install these extensions in your Salesforce org. Sorry, in your VS Code. Okay. These are tools which will help you with working faster, better with Salesforce, writing Salesforce code and everything. This will help. Okay. ओवर टाइम एक बार आपको जब इन सब की आदत हो जाए उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग यू कैन सर्च, यू कैन फाइंड बेटर एक्सटेंशन जिससे आपको लगता है कुछ यूजर के ज्यादा हो. अब जैसे आई ट्राई टू वर्क विद मुझे यूआई थीम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, इसलिए आई हैव दिस स्पीकर which is like useful to change instances and identify and change code base and everything. Fine. So anyway, ये extension आप लोग start कर लेना. Now we will go back to more of a tool of what this is. Okay, so the first thing if you see here, this is the Explorer. Explorer के अंदर आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके. Either आपने कोई लोकल एक फोल्डर बनाया है, लोकल एक प्रोजेक्ट आपने अपने सिस्टम में बनाया है, तो आप वो ओपन कर सकते हैं यहाँ से. या फिर नॉर्मली दिस वोंट बी हाउ यू विल बी वर्किंग, बिकॉज इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, एक ही प्रोजेक्ट का कोड है जिसमें 4-5 डेवलपर पैरेलली काम करते हैं. तो इन मोस्ट केसेस इट इज केप्ट इन ए कॉमन रिपोजिटरी. कोड रिपोजिटरी जो होता है वहां पे रखा होता है. इट इज नथिंग बट अ क्लाउड लोकेशन. इंस्टेड ऑफ द कोड बीइंग इन योर लैपटॉप, उसका मेन कॉपी रहेगा क्लाउड में एक सर्वर पे. आप वहां से क्लोन करके अपने लैपटॉप में कोड लाएंगे, काम करेंगे और वापस वहां पे भेज देंगे. ओके, सो दैट इज द पर्पस ऑफ द रिपोजिटरी. So this functionality, if you see, this is called a clone or repository local. वहां से हम कोड आता है, भेज जाता है, this is what it is. But basically जो भी आपको फाइल्स आप मॉडिफाई करेंगे वो सब आपको दिखेगा यहाँ पे inside the Explorer. Okay. The सर ये next कहाँ tab, से ओपन होगा एक्सप्लोरर? ये लेफ्ट में ये जो आइकन्स आए हैं यहाँ पे सबसे ऊपर है Explorer. राइट सर, इसके अंदर हम जो भी बनाएंगे वो यहाँ पे दिखेगा और हम क्लोन भी कर सकते हैं कॉपी करके बाहर से दूसरे उससे। Right. Right. You can create a new blank project in your org. वहां से आप यहाँ पे करेंगे या फिर you will have to clone repository. I'll show how in most cases, because you will have to clone a repository. So how that works, I'll show you. Okay. Now this is a global search. Nothing, just a global search. कहीं कोड में कोई एक वर्ड आपको सर्च मारना है, आप यहाँ पे सर्च कर दें, वो वर्ड आपके पास आ जाए. वो कहाँ कौन कौन सी फाइल में वो वर्ड है, ये आपको पूरा लिस्ट ऑफ फाइल्स यहाँ पे दिखा. Okay. This if you see here, source control. Again, this is something that works once you clone a repository. The source control lets you make changes. रिपोजिटरी का मैंने आपको क्या पर्पस बोला, कोड कहीं पे क्लाउड में सेव्ड है, आप एक लोकल कॉपी अपने लैपटॉप में लाएंगे, मॉडिफाई करेंगे, वापस भेजेंगे. सो दिस सोर्स कंट्रोल वाला ये जो टैब है, दैट्स लेट यू कंपेयर. क्या ऑनलाइन किसी और ने कुछ कोड पुश कर दिया जो अभी आपके सिस्टम में नहीं है, तो योर सिस्टम इज बिहाइंड द करंट कोड. ठीक है. या फिर आपने अपने कोड में कुछ चेंजेस किए हैं जो अभी तक आपने ऑनलाइन में नहीं भेजे, तो योर कोड इज अहेड ऑफ द ऑनलाइन. ओके. सो द सोर्स कंट्रोल लेट्स यू मैनेज योर कोड वर्सेस द एक्चुअल ऑनलाइन कोड जो कहीं पे सेव है. रन एंड debug, this is for code debugging. Even I myself don't use it that much. It is not very intuitive, इतना easy to use नहीं है. There are better ways to debug code, right? Not this one.
extensions we just saw, and ये जो है this is the git lens का जो extension आता है ये पूरा git lens के अंदर चलता है. Normally we install git lens so that we can use it. Three features. Git lens is actually a paid service, so we don't want to use the advanced git lens, so that's why we don't go to this. हम उसका free जो services है उसी को हम use करेंगे. Now till this part, anything, any issue, everyone clear? Sir, everything is cleared, but I would like to suggest if you could just adjust a little bit of your mic. The voice is coming, but it is little tough to understand. Okay, is it better now? Yes, sir, absolutely great. Okay, fine, great. तो यहाँ तक जस्ट एक बेसिक मैंने टर्मिनोलॉजी आप लोगों को बोला VS कोड का. ओके, टिल हियर एवरीथिंग क्लियर और नॉट क्लियर? सर जब मैं एक्सप्लोरर पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ओपन फोल्डर का, वो क्लोन का नहीं दिख रहा. ये क्लोन का आपको नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा. किसी और को भी क्लोन का नहीं दिख रहा है? और किस किस को क्लोन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है? सर मुझे भी नहीं दिख रहा. मुझे भी नहीं दिख रहा सर. आई वुड अज्यूम किसी को भी नहीं दिख रहा होगा. इज इट? किसी को दिख रहा है? इज एनीवन एबल टू सी? No one is able to see. Okay, so the reason for this is probably you do not have installed Git in your laptop. Git का एक बेसिक टूल है जो लैपटॉप में इंस्टॉल्ड होना चाहिए. You have to do this. You can go with the main Git repository. Okay, just go to Git. यहाँ पे जाके Windows का जो है इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए. Okay, once this is enabled, then only VS Code will detect that Git is installed in your local machine. तो वो वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा. Probably since it is installed only once, so that's why I also forgot to tell you guys. But Git आपको install कर लेंगे क्योंकि आप Git का functionality आप use करते हैं. Okay, is that clear? Okay, sir. Yes, sir. Right. This part is fine. Right. Now all this I have told you, these are all extensions. Other than that, actions आपके पास कुछ रहते हैं, जैसे कि in Windows normally you do Control Shift P. In Mac OS you will do Command Shift P. Inside Command Shift P, you see, it shows you all the actions that VS Code has that are applicable. Okay, now you see here, these are all the common actions. ये across कोई भी language, these are the things that should work, which is why those are added here. For specific to us, Salesforce specific actions के लिए, we need the SFTX. ओके, SFTX अगर इंस्टॉल होगा तो ही आपका Salesforce actions आपके पास आएंगे. Now, as much as I recall, I had told you to install the VS Code and the JDK, right? Why I had asked you to install VS Code and JDK? Because Salesforce में हमने क्या देखा था, जो तो आपका कोड जो हम लोग डेवलपर कंसोल से कर रहे थे, डायरेक्ट ऑर्ग में कोड खोला, कोड लिखा, कोड सेव कर दिया, right? But VS Code is not actually connected to your org. So आपका Windows से Salesforce तक अगर आपको कोड भेजना है तो उसके लिए you need some kind of a interface that will interact from a local machine to cloud. ये क्लियर हुआ?
लोकल मशीन से क्लाउड हमको जो भेजना है कोड, सो यू नीड सम काइंड ऑफ टूल, राइट? जैसे वहां पे करने के लिए तो डेवलपर कंसोल सेल्सफोर्स में खुल रहा था, सेव हो जा रहा था, बट अब लोकल अपने लैपटॉप से कैसे क्लाउड में कोड इंटरैक्ट करेंगे, सेल्सफोर्स के कमांड्स भेजेंगे? For that, Salesforce has created something called a CLI, okay, which is a command line interface. This is the Salesforce CLI. Now, this CLI is used to get all the Salesforce DX features. Okay, what are the Salesforce DX features? This is basically the pipeline which will enable you to perform out of all of these actions. Salesforce actions also get created here. Okay, is this clear? Yes, sir. So these are all key tools you will have to remember, and not just remember, you will have to keep updating. ये जो CLI है, इसका जब भी कोई नया फंक्शनैलिटी आता है उसके अकॉर्डिंग ये अपडेट होता रहता है, तो ये आपको भी अपडेट करते रहना पड़ेगा. Share this link. Is this clear to all of you? What CLI means? सर CLI इंस्टॉल करना है. हाँ, इंस्टॉल आप कर लो. अभी आप इंस्टॉल डाउनलोड करना शुरू कर दो. इंस्टॉल एक exe फाइल है, आई थिंक, उसको इंस्टॉल कर लो अपने लैपटॉप में. इट विल टेक सम टाइम, बट इंस्टॉल इट. ओके, बट डिड यू गेट द कॉन्सेप्ट what a CLI is, what a SPX CLI is? Because that is something people will ask to programmer. Okay, do you use CLI? आपको CLI के कमांड्स पता है, राइट? कैसे उनको इन्वोक करना है, VS कोड में कैसे लिंक करना है. सो दीज आर थिंग्स यू शुड नो. So CLI is the basically SFDX is the command line interface that lets you connect from a local Windows or a Mac machine, local machine, to the cloud environment, so that you can interact with it. Okay. Is this clear to everyone? Yes, sir. Anyone has any doubts, queries? No. Great. Fine. Now, CLI, you have learned what CLI is. Just go through this page also when you are installing it. Right, bound, this is basically the definition, like what it does. It lets you connect Salesforce orgs and everything, right? यहीं पे आपका इंस्टॉलेशन का सेटअप गाइड भी है, कैसे आपको इंस्टॉल करना है. जस्ट गो थ्रू इट. इट्स नथिंग, जस्ट इंस्टॉल, फोल्डर सिलेक्ट एंड डन. ओके, नाउ एक बार आपने ये सब कर लिया, राइट? आफ्टर दैट, हाउ इट विल लुक? तो फर्स्टली आपको प्रोजेक्ट जब लोड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्लोन अ रिपोजिटरी, राइट? आपका प्रोजेक्ट का ऑलरेडी कोड कहीं पे सेव होगा. You are supposed to clone a repository. Now there are few options जहाँ पे अभी कोड लोग सेव करते हैं. There are some Git repos, GitHub में लोग स्टोर करते हैं, ठीक है. Bitbucket है एक टूल, Bitbucket में कोड रिपोजिटरी स्टोर होती है, and GitLab is another tool. In my case, in my current organization, code is stored in GitLab repositories. Okay, that is dependent on company license, who got a better deal, right? It can be GitHub, it can be GitLab, it can be your Bitbucket, whatever is there. So I'll show you an example of a repository here. So this is, you see, is the tool GitLab. अब यहाँ पे GitLab के अंदर, if you see, there are multiple projects. All of these are projects or repositories which I currently work with. Okay, so within every project, if you go and see, a lot of files are there. Okay, this is one repository. Okay, this is one repository. This repository is for a specific project.
यहाँ पे उस रिपोजिटरी का, उस प्रोजेक्ट का जितने भी क्लासेस हैं, जितना भी कोड है, ये सब कुछ इस स्पेसिफिक रिपोजिटरी में रखा हुआ है. Now do you understand what repository means? Yes, sir. Can I explain? Right, it is an online location where your whole code for a project is saved. Now from here, okay, if you want to pull code into your VS Code, right? So then what you need is, for any of these repositories, they should have a URL. Okay, हर एक repository का एक URL रहेगा. From here, you can get that URL. And this exact same functionality सारे टूल्स में सेव है. आप बिटबकेट में भी रिपोजिटरी पे जाएंगे ऐसा ही दिखेगा, आप गिटहब में भी जाएंगे ऐसा ही दिखेगा. रिपोजिटरी है, रिपोजिटरी के अंदर आपके पास क्लोन का एक यूआरएल वो दे देगा कि दिस इज देयर यूआरएल. सो वीएस कोड में जाके जब आप करेंगे, you will go to clone a repository and you will paste that URL. And what the end result of this will be? Normally in this case, it will then ask you for a username and password. So जो भी कोड आप एक्सेस कर रहे हो उसके लिए आपके पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा, जो नॉर्मली आपका लीड मैनेजर, राइट, या आपके सिक्योरिटी टीम का कोई आपको जनरेट करके दे दे. तो वहां पे मैंने जो आपको रिपोजिटरी दिखाई, दैट सेम रिपोजिटरी आई ऑलरेडी हैव ओपन समवेयर एल्स, व्हिच इज हियर. नाउ इन दिस केस, सी दिस फिनिक्स जो मैंने आपको रिपोजिटरी दिखाई, राइट, this repository only I have cloned here. That means all the files which are there are also here. Now I have access to code. ये मेरा जो भी कोड है उस ऑर्ग में वो मेरे पास आ गया. Is this clear? What a repository means, how you get code? Yes. Anyone else? किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, किसी को कोई क्वेरी? एनीवन? नहीं समझ आया किसी को कुछ? और एवरीवन, इफ एवरीवन इज क्लियर, यू हैव टू से यू आर क्लियर. Yes, sir. सर और एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, तो रिपोजिटरी का मतलब जो मैंने आपको बताया था, राइट, कि कोड इज समवेयर स्टोर्ड ऑनलाइन इन अ सर्वर. उसी को आप VS कोड में क्लोन रिपोजिटरी करके, if you see here the same files ASCII, VS code, approach config, main app default, effects, right, same files are also here. Yeah, ASCII VS code config, which means अब क्या होगा, everyone in my team is working with code here but in the local code. Okay, तो एक ही फाइल में एक साथ सब चेंज नहीं कर रहे हैं, सब उस फाइल का एक अपना कॉपी बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, फिर वापस ऑनलाइन भेज रहे हैं एक एक करके. ओके, एवरीवन क्लियर, नॉट क्लियर? या क्लियर सर. फाइन. नाउ अब इसमें जैसे प्रोजेक्ट तो हमारे पास आ गया, कोड हमारे पास आ गया, बट हमको तो नया कोड बनाना है, राइट. सो फॉर दैट
Again, Control Shift P. See, because I have already assigned SFDX here, so I can see all these options. I can just write here SFDX create. Okay, I can create a Lightning Web component. I can create an Apex class. I can create an Apex figure, an application और a component और जो जो चीजें हम डेवलपर कंसोल में बना सकते थे वो सब और उससे ज्यादा हम यहाँ पे कर सकते हैं. Okay, everything we can do here. Is this clear? Yes, sir. Good. Now we come up with another problem. कि अब यहाँ पे मैंने कोड बना तो दूंगा बट ये कोड जाएगा कहाँ पे? अभी तक तो हमने किसी सेल्सफोर्स ऑर्ग को लिंक ही नहीं किया. हमारा कोई सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट लिंक तो होना चाहिए, उधर ही तो कोड जाएगा, राइट? सो फॉर दैट what I want is any one of you, I want you to send their a developer edition org सबसे अच्छा. Any one of you send their Salesforce org का आपने जो username और password सेव किया. Anyone who wants to share in the chat. Okay, it's one person. Okay, that should be enough. Fine. Now, what I'll do is, जैसे ही आप लोग कोई रिपोजिटरी कर लेते हैं या कोई प्रोजेक्ट लॉग इन कर लेते हैं, at the bottom you will see there is this one option जो अभी आप लोगों को दिखेगा, नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट. अभी आप लोगों को एक्चुअली कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी आप लोगों ने CLI इंस्टॉल नहीं किया है, बट वंस इट इज डन इट विल शो हियर नो डिफॉल्ट ऑर्ग सेट. इनिशियल वो रहता है. अभी मेरे पास जैसे मल्टीपल ऑर्ग्स आई ऑलवेज वर्क विद व्हिच इज व्हाई आई हैव ऑल दोस ऑर्ग्स कनेक्टेड, बट इन योर केस सपोज इट इज अ ब्लैंक ऑर्ग, देन अब हमको कनेक्ट करना है. सो आई विल क्लिक ऑन फर्स्ट हियर and then I'll click on authorize an org. Now ये जो org हमको भेजा है उदित का जो org है that is a developer edition org, which will means it is not a sandbox, so it will be treated as a product. And let's name it enter. अभी क्या होगा देखो, Salesforce CLI is running and now it will open the browser. ब्राउजर में आके वो बोलेगा आप पासवर्ड डालिए, यूजर नेम और पासवर्ड डालिए. पासवर्ड and so username and let's add a password. Log. See, first time connect करने के लिए it will send a verification email to whoever is the admin जिसका हमने username credential लिया है, just to make sure कोई और आपके behalf पे ना करे. Udit, you should have gotten a 6-digit OTP in your, can you tell that? Right, sir. I'm telling. Just give me a second. Sorry? But I'm saying I'm telling. Just give me a second. Oh, okay. Sir, it is 64 64 1712. 1712. Verify and it will just show us a question that see
That is why I was also telling you go against exception. See, when you allow access, the app and the third party can access your data. अभी ये जो हमने CLI को access दिया, what does that mean? VS Code also has access to my code and my data. This same thing is also applicable for all of those thousands of extensions you can see. इसलिए बहुत सोच समझ के extensions को install करना है जो और को access दे दे. ओके, पर्सनल और जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एडिशन और में कुछ एक्सेस मिल भी जाए तो उसको कुछ डेटा मिलेगा नहीं, राइट? बट एक्चुअल प्रोडक्शन और उसमें फॉर प्रोजेक्ट्स अ लॉट ऑफ डेटा इज okay. See, if you have successfully logged in, you can close this browser. I'll close it and let's go back to VS Code. See, authorize an org successfully ran from the Salesforce CLI integration, and this now changed to Udit org. Now the same thing जो हम डेवलपर कंसोल पे कर रहे थे वही सब हम यहाँ से कर सकते हैं, which is Control Shift P, create an Apex class, right? Demo class, org, this is a demo. Inside this, let's create a method, public void, small method and calculate sum, right? Uh, and system work, void 1 plus void 2. Let's अभी this class I have created, but अभी अगर हम उदित के org में जाके देखेंगे तो ये क्लास वहां पे मिलेगी नहीं. Why? Because as I mentioned, this is a local, right? ये मेरे लैपटॉप में है खाली इस वक्त. अगर मैं अभी मेरे लैपटॉप से फाइल डिलीट कर देता हूँ तो ये फाइल डिलीट हो जाएगी. So then what I need to do is right click here and you will see there are a few SFTX actions here also. Delete this from project and all. That means it will get deleted. Local copy भी delete हो जाएगा. उदित की org से class भी delete हो जाएगा. Deploy the source to org. अगर मैं ये क्लिक करता हूँ तो ही मेरा ये कोड वहां पे जाएगा. Which would mean जब भी आप लोकल को कॉपी में कुछ चेंज करते हैं आपको जैसे VS डेवलपर कंसोल में हम सेव करने पे ही org में चला जा रहा था, यहाँ पे आपको डिप्लॉय करना. डिफ का क्या है? दिस इज बेसिकली यहाँ पे मैंने सपोज 5 लाइन चेंज की, अभी org में 5 लाइन नहीं चेंज हुआ तो वो डिफरेंस ही मेरे को हाईलाइट करके देगा. रिट्रीव हम पुल करेंगे फाइल कि मेरे पास फाइल नहीं है org से फाइल लेके. So we will see both of those. Okay. What I'll do is let me deploy this first. Now as soon as this is deployed, see deploy was successful. Now I'll stop sharing my screen. Udit, can you share your screen and then open developer console? Okay. Sir, can you see my screen?
Loading. Yes, we can see your screen. Now go to developer console in your code. And see if that class is available here. Yes, sir. It is Demo there. class to the top. It came, right? So whatever I made the change, I was able to move that code to Salesforce. So this is how instead of developer console, VS Code support करते हैं. Initial setup में issues हैं, but उसके बाद it becomes far easier. And the main purpose of using VS Code is कि वहाँ पे आप Git का use कर सकते हैं. Git का use क्या होता है? किसने कब कौन सी फाइल में क्या चेंज किया? Everything can be tracked, which is the reason Git issue. Now deploy we also, right? Now let's do one thing. After line 7, Udit, write another line. System.debug, and inside the brackets, inside the string, write operation successful. Successful. So the calculate operation was successful. Add a semicolon and then save. That's it. Right. Now you can stop sharing your screen. That's your screen. Right. Let me know once my screen is visible, guys. दिख रहा है मेरा screen? Yes, sir. So now what I'll do? I'll go here now this time and I'll do what? First I'll do a diff. As soon as I do a diff file against all, see what does it show me? That this is my code, but this is the code in the org. Okay. In the org, one more line is added, which is currently not in my local copy of the code. So ideally मेरे को तो ऐसा करना नहीं होना चाहिए, right? Because here just for demo we have put one line. In normal case क्या होगा? आपने 3 मेथड लिखे, आपके टीममेट ने 3-4 मेथड लिखे. अब वो 3-4 मेथड आपकी क्लास में तो आने चाहिए. So that is why we did a diff. And now what we'll do is retrieve. And this code got updated. Right? So that means using VS Code, you can do the same things that Table Developer Console does, which is write new code, see other people's code, update code, fetch code from the org, send code to the org. The only added benefit is a lot more functionalities are extra here जो आपको developer consoles में नहीं मिलेंगी. Okay, like यहाँ पे आप वर्जन कंट्रोल का यूज कर सकते हो. यहाँ पे आप LWC कंपोनेंट बना सकते हो. डेवलपर कंसोल पे आप LWC नहीं बना सकते. That's the reason we use VS Code. Now till here, I'll stop. I'll stop today at this point because I want to take questions first. Anyone has any questions, any queries? सर आपने वो जो बताया था ऑपरेशन जिसके अंदर जो हमने ऑर्ग के डेवलपर कंसोल से करा और हमने जो वीएस कोड में लिखा था वो साइमल्टेनियसली साथ साथ आ गया था एडजेसेंट एक दूसरे हाँ, के वो कौन वो है से उससे diff आया था code with org. डिफ Diff code. Diff means difference, right? Diff ओके code डीएफ with डबल org. हाँ, that operation does basically आपका local copy of code versus उसी फाइल में org में क्या है. Okay.
ओके सर। Anyone has any questions, any queries? No? Fine. No issues. What I'll do now is I'll actually send you. So this is mostly your overall step-by-step guide. Okay, for how to set up everything here. I will send you guys all the steps. Now, out of these all the steps, few steps are not needed as of now, right? So make sure you go through the recording while you are performing these steps so that you only perform the ones which you need. Am I clear? Yes, sir. Right. Now, I've shared that as a link in the WhatsApp. It will also have the links for installing the tools. So please software install करना है. उस सबका भी link है. You just go through all this, make the changes wherever they are needed, whatever you want to add, and then hopefully कल आप सबके इसमें you should know at least go through the documentation. Git क्या होता है, CLI क्या होता है, right? SFTX क्या है, तो उसके बाद repositories क्या होता है. Go through these. And then tomorrow, what we'll be focusing on basically version control, which means how the Git works. Just I'll give you a brief example as of now. Suppose अभी हमने जो change किया है, हमने file modify किया. Now in Git, if you see source control में मेरा एक change आ चुका है कि ये फाइल में हमने कुछ चेंज किया है. This is a new file which we have created जो पहले नहीं था. Now we need to push this. Okay. तो ही जाके ऑनलाइन ये फाइल दिखेगी. So similarly, all of these things, if I expand it, if you see here, यहाँ पे uncommitted changes हैं, right? These are ये previous are all the committed changes. जो भी मैंने पहले change किया था, इस class में मैंने कुछ changes किए थे. Okay. So at what point I did those, at what time I did those, everything is done. Okay, 12 lines added, 29 lines deleted. Who did this? I did this 56 minutes ago, right? So similarly, all of these changes have to be tracked. So that's why tomorrow we will work to what Git is. उससे पहले आप थोड़ा VS Code का एक basic आप study जान लो. That is better. Okay. Okay, sir. So install the tools I have mentioned. You like to install कर लेना, वो भी कर लेना, and then tomorrow once we connect, we will continue. इसमें I am assuming कुछ लोगों को problem आ सकता है, doubt आ सकता है, maybe setup ना भी हो. Nothing to worry. We'll connect tomorrow anyway. हम उसको walk through करेंगे पूरा. जिसको कोई issue आ रहा है, we will resolve all of those so that everyone could have it set. Okay. Okay, sir. Right. Just make sure जो extensions मैंने आज दिखाई वो आप install कर लें. Salesforce CLI अपने laptop में install कर लें and you should have it up and running. Okay. Okay, sir. Thank you. ओके Thank you. Thanks a lot everyone.
प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस मोर. जो मैंने स्टेप्स व्हाट्सएप पे दिए हैं उनको भी गो थ्रू कीजिए एंड प्लीज वर्क ऑन दैट एंड देन लेट मी नो हाउ वाज इट. थैंक यू एवरीवन. Have a good night. We'll connect again tomorrow and we'll continue from this. Okay.